I welcome all of you to this brand new series of trading. This is a series which we do every Monday, in which I come on as an instructor to discuss about a certain aspect of trading. Last month, which was December 2025, we had touched upon four very interesting intraday trading series, and which were opening range breakout, VWAP trading, OHL, open high, open low, and retracement trading concepts. Recordings of these videos are there on our channel, on the YouTube channel. I request all of you, whoever is interested in learning more about that, about intraday trading series, can watch those videos. So this series for the month of January 2026 is going to be all about options trading. Okay. Series will be in English, Hindi as well as in English, as is my practice, and we will try and come every Monday at about 12 o'clock for about 1 hour. Certain disclaimers from as per SEBI, no tips or trading recommendations are going to be shared in this next 1 hour of our video. All we are going to do is learn about a particular aspect of trading. आज का जो टॉपिक है वो होगा ऑप्शंस के ऊपर. So let me just share the slide deck so that we can start the session. So I hope you're all able to see my screen and hear my voice clearly and see the video as well. तीनों चीजें जरूरी है. चलिए, लेट मी स्टार्ट द सेशन. बिफोर दैट कुछ डिस्क्लेमर्स हैं, वो आप लोगों को जाना जरूरी है. मेरा नाम अमित गोयल है. मैं एक CMT चार्टेड मार्केट टेक्नीशियन और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ. SEBI registration number is so and so, and the BSc enlistment number is also here. This is my website, amitgoelresearchanalyst.in, on which all the disclaimers and disclosures, rules and regulations, responsibilities, duties, everything is mentioned, along with SEBI scores, ODR portal details, in which you will be made aware of what your rights are as learners, what my regulations, what my rules are, what my duties are as a instructor. Okay. As I mentioned earlier also, and for the benefit of people who are joining us just now, no trade strategies, no trading recommendations, no trade tips will be shared in this 1 hour series. We will only be discussing about a concept. तो ये सिर्फ एक एजुकेशनल वेबिनार सीरीज होते हैं जिसमें हम लोग ट्रेडिंग को किस तरह से बेटर करते हैं, ट्रेडिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स को, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट उठाएंगे और उसके बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे. ये पूरा का पूरा जो सीरीज है ये रिटेल ट्रेडर्स के ऊपर फोकस है. इसके लिए हम लोग इसको बहुत सिंपल रखेंगे. ज्यादा कॉम्प्लेक्स या पाइथन या एल्गोरिथम ट्रेडिंग या कोई भी ऐसी चीज नहीं करने वाले हैं जिससे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़े. बहुत ही सिंपल रखेंगे, बहुत ही बेस लेवल पे रखेंगे, और लैंग्वेज भी बहुत सिंपल रखेंगे. हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बात करेंगे ताकि ऐसा लगेगा कि भाई अपने कोई क्लासरूम में नहीं बैठे हैं, बट घर के नीचे जो एक चाय की टपरी, नुक्कड़ की चाय की टपरी होती है ना, वहां पर बैठ के सर्दियों के मौसम में चाय की चुस्की लेते हुए डिस्कशन कर रहे हैं मार्केट्स के बारे में. सो जस्ट इमेजिन दिस इंटरेस्टिंग एंड वेरी नाइस वेलकम ऑफ अ चेंज ऑफ सिनेरियो. ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट द सेशन. डिस्क्लेमर्स एंड स्टैंडर्ड वार्निंग्स हैं, आप कभी भी इसको देख सकते हैं. मैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करूंगा. आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंडेक्स ऑप्शंस ट्रेडिंग बिकॉज दैट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग, एंड देन वी विल गो इन डेप्थ इन द नेक्स्ट फ्यू सेशंस दैट वी हैव लाइंड अप फॉर दिस मंथ ऑफ January.
गैंगस्टर गेमिंग, आप टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं कि निफ्टी 50 लाइफ टाइम हाई अगर ब्रेक करता है तो अपसाइड कहां तक जा सकता है। सर इसके बारे में देखिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में है। आज का जो सेशन है एक टॉपिक के बारे में है। मैं कोशिश करके उस टॉपिक को पहले कवर कर लेता हूं, और अगर हमारे पास समय बचा तो मैं थोड़ा सा मार्केट का एनालिसिस भी कोशिश करके करेंगे, बट नो प्रोमिसेस देयर। ऑलराइट, नाउ इंडेक्स मार्केट स्ट्रक्चर एंड ऑप्शन सेलिंग जोन्स। हम बहुत सिंपल टॉपिक ले रहे हैं कि अगर मैं इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहता हूं तो मैं ऑप्शंस को किस तरीके से ट्रेड करूं। ऑप्शंस इंट्राडे में इंडेक्स ऑप्शंस को सेल कब करना है मेरे को और सेल कब नहीं करना है, उन दिनों को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। और उनके लिए वी हैव सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस, सर्टन checklists which we will try and understand why those checklist points are there and what is the logic behind it. ठीक है, is this the only way that you can function, you can segue into intraday option selling? The answer is no, this is not the only way. But is this an effective way? Probably the answer is yes, this is an effective way. We will come to the strike price selection and all those things in certain way. ठीक है, now so basically, what is the blueprint of the market? There are three things that we should be aware of. एक होता है spot, which is your index, right? And we are focusing on Nifty and Bank Nifty per se. You can even consider Sensex for that matter. So you have the spot chart, you have the futures chart, and then you have the options data, right? So you have the spot chart which moves. You have the futures chart, which actually is the traded index. So the volumes shown on the futures chart are going to be real, are going to be the actual live volume which is getting traded. So any movement in the underlying along with corresponding volume will give you more evidence as to which side the index is trying to move, whether it is trying to move in a direction or whether it is lackluster. Then you have the options data. ठीक है, इंट्राडे में ऑप्शंस डेटा क्या बिल्ड होता है, किस तरह से ओपन इंटरेस्ट चेंज होता है, किस तरह से पीसीआर मूवमेंट होता है, किस तरह से स्ट्राइक का द बैलेंस और इम्बैलेंस ऑफ कॉल ओपन इंटरेस्ट एंड पुट ओपन इंटरेस्ट अराउंड द एटीएम एट द मनी का स्ट्राइक, किस तरह से वो शिफ्ट हो रहा है, दैट गिव्स यू एन एविडेंस whether the market is trying to become bullish or trying to become bearish, or in fact it is lackluster or it is undecided or sideways or a range bound market. तो ये कुछ डेटा पॉइंट्स स्पॉट चार्ट या फ्यूचर्स चार्ट या ऑप्शंस चार्ट पे नजर आते हैं. वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दोज थिंग्स. एंड do we need to do a lot of analysis before we get into an options setup? The answer is no. This is some theoretical backdrop. ठीक है, ये हमको अवेयर होनी चाहिए कि भाई फ्यूचर्स चार्ट का जो वॉल्यूम कैंडल होता है वो रियल कैंडल्स हैं, दैट इज द रियल एक्चुअल ट्रेडेड वॉल्यूम्स. एंड ऑप्शंस का डेटा हमको बताता है कि भाई मार्केट में क्या टिल्ट है, if it is a bullish tilt, bearish tilt, or there is a change in the stance. Let me just go through the questions a little bit before I start the discussion. इन द मनी स्ट्राइक के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों ही में होते हैं, जिससे प्रीमियम ज्यादा मूव करता है, तो क्या ये सही है? सो देयर इज अ क्वेश्चन कि इन द मनी स्ट्राइक प्राइस में इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यू दोनों होता है और उसके कारण वो ज्यादा मूव होता है. द आंसर इज पार्टली करेक्ट, पार्टली रॉन्ग, पार्टली करेक्ट. ओके, इन द मनी ऑप्शंस में इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यू दोनों होते हैं, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में ओनली टाइम वैल्यू होता है. यहां तक करेक्ट है. क्या वो ज्यादा मूव होते हैं या कम मूव होते हैं, उसमें इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, उसमें डेल्टा का कॉन्सेप्ट आएगा. क्योंकि फॉर गिवन अंडरलाइंग प्राइस मूवमेंट, हाउ मच एन पर्टिकुलर ऑप्शन, how much a particular option's premium will move will depend on what is the delta it carries. So higher the delta, higher the movement, and lower the delta, lower the movement. Higher the delta is for those strikes which are in the money, lower the delta is for those strikes which are out of the money. And since ये question अभी उठा है तो मुझे लगता है कि इसको मैं यहीं पे आंसर कर दूं. Like
let me just take a little bit of a leeway here, and I will answer this question to all of you. Okay. Calls, puts, ये आपका ऑप्शन चेन होता है, ठीक है. This is ATM. Okay, this is ATM. Let's say, for example, Nifty is 26,300. So ATM price will be 26,300. Okay, and price chart इस तरह से देते हैं, right? 27,000, 26,000. Option chain is in descending order. Sorry, in ascending order, and price chart on the on our charts on which we look at is actually ascending, मतलब sorry descending, नीचे से ऊपर बड़ा होता है, और ऑप्शन चेन जो है ऊपर छोटे होते हैं नंबर्स एंड नीचे बड़े होते हैं, राइट. बहुत सिंपल है, आप इसको समझिए. कॉल में these are in the money calls, these are out of the money calls, this is out of the money puts, and this is, these are in the money puts. तो एक स्नैपशॉट है. वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन डेप्थ इन द कमिंग क्लासेस, बट यहाँ पर आप इतना समझिए कि एक प्लस साइन बनाएंगे, एटीएम के पास हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, एंड कॉल्स, नीचे वाले जो कॉल्स हैं, प्राइजेस, दो स्ट्राइक प्राइजेस बिलो द करंट मार्केट प्राइस आर इन द मनी कॉल्स, एंड करस्पॉन्डिंगली दे आर आउट ऑफ द मनी पुट्स. तो सेम स्ट्राइक्स इन द मनी कॉल्स होंगे एंड आउट ऑफ द मनी पुट्स होंगे, ठीक है. दोनों इन द मनी नहीं हो सकते. एंड स्ट्राइक्स अबाव द करंट मार्केट प्राइस, कॉल्स आर आउट ऑफ द मनी एंड पुट्स आर इन द मनी, ठीक है. सो ये हो गया हमारे कॉल्स एंड पुट्स. मैं यहां पर अगर मैं डेल्टा की बात करूं, इफ आई वेर टू टॉक अबाउट डेल्टा, if I were to talk about delta here for both calls and puts, right? Delta for both calls and puts are 50 and 50 at the money. Okay, और यहां पर क्योंकि in the money है, it will go to 60, 70, 100. ठीक है. Similarly, अगर ये 60 है तो ये आपका 40 होगा, ये आपका 30 होगा, ये आपका 0 होगा. Total delta for every strike will always be 100. ठीक है. Similarly, this will be 40, 30, 0. This will be 60. I'm just giving you a random example. This will be 100. Clear? This is your ATM. Again, total will always be 100. So this is your मैंने आपको इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ATMs बता दिया, मैंने आपको डेल्टा का मूवमेंट बता दिया, ठीक है. सिंपल है. सो जितना अगर आपने कॉल खरीदा है एंड प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, यू हैव अ, जितना भी आपका कॉल का डेल्टा होगा उतने परसेंट से आपका चेंज होगा. लाइक इफ इट इज अ 70%, 70 इज बेसिकली 70% और 0.7 डेल्टा इसको बोलेंगे. तो अगर 100 रुपीज से निफ्टी मूव होगा, आपका ऑप्शन प्रीमियम, जो भी आपका प्रीमियम होगा, इनटू प्लस रादर प्लस 70% इंक्रीज होगा, ठीक है. एंड इफ इट इज अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो, एंड आपने 60 फुट का डेल्टा लिया हुआ है, तो उतने से आपका प्रीमियम बढ़ेगा. ओके, तो इनवर्स रिलेशनशिप. I hope this is clear, everybody. Yes or no? चलिए. Now, basically हमको मार्केट में दो चीजें, एक चीज आइडेंटिफाई करनी है, whether it is in a contraction or a rectangular trading phase या it is in an expansionary mode today. ठीक है.
इंट्राडे में क्या वो एक्सपेंशन मोड में है आज मार्केट, या वो रेंज बाउंड ट्रेडिंग है, ठीक है। हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट? तो एसेंशियली व्हाट वी हैव टू डू इज इन द फर्स्ट 10-15 मिनट्स, right before when the market starts at 9:15, for the first 15 minutes observe the market, ठीक है। and you need to identify certain prerequisites कि भाई previous day high क्या था, previous day low क्या था, previous day closing कहाँ था, what was the previous day's market, what is the prior trend been in the market for the last few days, क्योंकि बहुत 1 साल 2 साल का अपने को डेटा से मतलब नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग है, 6 घंटे का काम है अपने, ठीक है ना, 5 से 6 घंटे का काम है मात्र। तो पिछले 3-4 दिनों का अगर हम लोगों को ट्रेंड मालूम रहे एंड किस तरह से मार्केट मूव हो रहा है, किस तरह से कैंडल स्टिक्स फॉर्म हो रहे हैं, दैट इटसेल्फ विल गिव यू सम आइडिया कि भाई मार्केट अप ट्रेंडिंग है, मार्केट साइडवेज है, कि मार्केट डाउन ट्रेंडिंग है, ठीक है। दैट्स क्वेश्चन, दैट्स ऑब्जर्वेशन नंबर 1। उसके बाद ड्यूरिंग द डे हम लोगों को ये मार्क कर लेना चाहिए कि प्रीवियस डे हाई क्या है, प्रीवियस डे लो क्या है, ठीक है। प्रीवियस डे की क्लोजिंग हाई के पास हुई थी कि लो के पास हुई थी, या इट वाज समवेयर इन द मिडिल, ठीक है। दैट गिव्स यू अस अ क्लैरिटी एज टू व्हाट टाइप ऑफ मार्केट ट्रेंड इट कुड बी, राइट। एंड इन द फर्स्ट 15 मिनट्स ऑब्जर्व वेदर द 15 मिनट्स बोल लो, हाफ एन आवर बोल लो, टिल यू गेट क्लैरिटी। ऐसा नहीं है कि 15 मिनट में अपना ट्रेन छूट जाएगा। देर इज नो प्लेन दैट इज गेटिंग टेकन ऑफ, देर इज नो ट्रेन जो आपकी स्टेशन से निकल रही है। 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, हाफ एन आवर, 1 आवर, टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड, मेक सेंस ऑफ व्हाट द मार्केट इज ट्राइंग टू टेल यू, द काइंड ऑफ बिहेवियर इट इज गोइंग टू इट इज लाइकली टू शो। अगर मार्केट साइडवेज जैसा मार्केट रेजिस्टेंस रिदम दिखा रहा है, आइडियल सिचुएशन है ऑप्शन सेलिंग के लिए, ठीक है। हम किस तरह के सेलिंग स्ट्रेटेजीज कर सकते हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे। एंड अगर मार्केट में ये दिख रहा है कि भाई ट्रेंडिंग डे हो सकता है मार्केट, सो फर्स्ट 15 मिनट्स, हाफ एन आवर या 45 मिनट्स या 1 आवर में मार्केट विल ट्राई टू ब्रेक थ्रू आइदर ऑफ द अपर रेसिस्टेंस और द डाउनवर्ड सपोर्ट एंड मूव इन दैट डायरेक्शन। तो दैट विल ऑल्सो गिव यू सम आइडिया कि भाई मार्केट जो है वो अभी एक ट्रेंडिंग फेज में है। तो इन द ट्रेंडिंग फेज you cannot look to do option selling strategies, उसमें दिक्कत आ सकती है। क्लियर? So the ideal or the optimal situation or the market condition is range bound or a balanced market की रिदम है मार्केट में। ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, नीचे से सपोर्ट आ रहा है, रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंसेस आर गेटिंग रिस्पेक्टेड, सपोर्ट्स आर आल्सो गेटिंग रिस्पेक्टेड, राइट। नाउ अर्ली साइंस मिल गए। Now what will happen is intraday high, intraday low हम लोगों ने एक मार्क कर लिया। Then we start setting up a trade, and what type of trades we can do? There are 4 types of trades that we can do, and we will learn about those 4 type of trades, right? Once we set up a trade, we will be in those trades. Either we have a clear-cut stop loss in place, premium-based stop loss, और द रेंज बेस्ड स्टॉप लॉस। अगर एक्सपायरी डे है तो रेंज के हिसाब से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर मार्केट ने वो रेंज तोड़ दिया, देन आवर प्राइमरी व्यू कि मार्केट रेंज बाउंड होगा वो फेल हो जाता है। तो अगर हमारा प्राइस एक्शन का प्राइमरी व्यू फेल हो जाता है, वी शुड गेट आउट ऑफ दैट मार्केट, वी शुड गेट आउट ऑफ दैट डे, वेदर इन प्रॉफिट और इन लॉस, वी शुड गेट आउट ऑफ दैट ट्रेड, right? Now how do you confirm this? You can check a range, you can check between spot and futures whether they are aligning, or whether the premium between spot and futures is is expanding. अगर वो expansion mode में है, market could be trending for the next few hours. So those are the times when you should not be looking to do non-directional option selling setups. How do you prepare yourself? Okay, at the initial stage what you will do is, okay, before that I will take some of the questions here. Questions क्या हैं? सर ओटीएम प्रीमियम्स का प्राइस
लेकिन उनके अंदर वॉल्यूम भी कम होता है, तो क्या वहां ट्रेड करना चाहिए? तो गैंगस्टर गेमिंग, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपके क्वेश्चन सब इसी से रिलेटेड हैं। थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से उससे अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए आपकी। सो जस्ट चार्ट पे किसको देखें? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। चार्ट पे फ्यूचर्स देखें कि स्पॉट देखें? ठीक है, आपका जिसमें कंफर्ट हो आप वो देखें। आइडियली मतलब अगर कोई प्यूरिस्टिक सेंस में बात करें कि ऑप्शन ट्रेडिंग कौन से चार्ट को देख के करना चाहिए, स्पेशली इंट्राडे, जहां हम लोग दो तीन कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे इंक्लूडिंग वीवैप एंड वॉल्यूम्स, तो आइडियल सिचुएशन में आपको फ्यूचर्स का चार्ट देख के काम करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर्स में आपको वीवैप भी करेक्ट दिखाता है एंड आपको वॉल्यूम्स भी सही दिखाता है। तो आइडियली आप फ्यूचर्स का चार्ट देख के काम करें तो बेटर होगा ना। किस तरह से आप इसको सेटअप करेंगे? बिफोर द स्टार्ट ऑफ द डे व्हाट यू विल डू इज प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो मार्क कर लीजिए। ठीक है, एंड ये हम लोग क्योंकि इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, तो लेट्स से 1 मिनट और 3 मिनट और 5 मिनट चार्ट पे जाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ ऑन अ ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म, so that we get the full chart in which we can look at setting it up. तो ये हो गया मेरा 1 मिनट का इंट्राडे चार्ट। लेट मी जस्ट गो टू 15 मिनट्स एंड प्रीवियस डे हाई लो। डे चार्ट, डे कैंडल खोल के मैं प्रीवियस डे का हाई लो मार्क कर देता हूँ। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। ठीक है, सो दिस गिव्स अस प्रीवियस डे हाई एंड लो। अपस्टॉक्स में फ्यूचर्स चार्ट कहां पे? ठीक है, व्हेन यू गो टू अपस्टॉक्स यू कैन सी ओवर हियर, लेट्स से आई हैव ओपन निफ्टी। ठीक है, ये निफ्टी का नॉर्मल चार्ट खुल गया। यहां पर मैं प्लस सिंबल पे जाऊंगा एंड देन आई विल से निफ्टी, एंड व्हेन आई से एफएलडो, निफ्टी फ्यूचर्स 1। ठीक है, फ्यूचर्स करंट कंटिन्यूअस कर लीजिए इसको। जस्ट ओपन दिस चार्ट, सॉरी ओवर हियर। ठीक है, सो दिस इज योर निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट, राइट। मैं बस वो थोड़ा बड़ा स्क्रीन दिखाने के चक्कर में इसको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लोड कर रहा हूँ। राइट, नाउ व्हाट वी हैव डन इज, ये इंट्राडे प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो था। सो लेट अस जस्ट मार्क दिस अ लिटिल better. Resistance, support. Are we clear? So what have we done? We have marked the high and low of the previous day. This is step one. We have already and it's easy when you have a day candle. You can simply mark the high and low of that candle and go to an intraday time frame. You will get these lines on your chart. ठीक है, ये हो गया अपना step one. What is the next step our presentation is telling us to do? मार्क द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स। यहां पर कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है? नहीं। क्या यहां पर मेरे को एक सपोर्ट दिख रहा है? लेट मी जस्ट से, इसको मैं सपोर्ट मार्क कर देता हूं। दिस विल बी माय, लेट्स जस्ट मार्क एवरीथिंग इन प्रीवियस डे लो, previous day high, okay, and this is the support.
right? These candles are today's candle. Okay, so once you have identified during the intraday कि भाई यहाँ पर एक resistance भी बन रहा है, I will simply mark resistance. Bottom left. Right. So what we have done is we have marked the previous day high, the previous day low, the intraday support and resistance in our understanding. The first few candles would have taught us this. This is the 5-minute candle. So first candle पे यहाँ पे resistance मिल गया, यहाँ पे एक support मिल गया. दोनों pivot दिख रहा है. Correct? This much we have done. Next step that we can do is we add the VWAP. Okay, there are two ways. So there was a lot of interest in VWAP intraday trading, and one of the requests was, Amit, please show us anchored VWAP versus normal VWAP. So I'll take this opportunity to show you how an anchored VWAP differs from a normal VWAP. ठीक है, let's do both. ये हो गया हमारा normal VWAP. ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग normal VWAP. All right. दिस इज सिंपल फॉर द सेशन कि भाई ये सेशन से मतलब यहां से एक वीवैप चालू होता है एंड इट विल सिंपली शो यू द वीवैप प्राइस. करेक्ट? दिस इज गेटिंग रीसेट एट एवरी सेशन. तो ये आज का कैंडल है, राइट? लेट अस गो हियर. ये आज का कैंडल था सुबह का, यहां से वो चालू हुआ वीवैप एंड देन इट स्टार्टेड शोइंग. ठीक है, ये हो गया नॉर्मल वीवैप. अगर मेरे को एंकर्ड वीवैप करना है एंड नॉट द नॉर्मल वीवैप, ठीक है, ये देखिए एंकर्ड वीवैप में क्या है, व्हाट इज इट दैट वी कैन डू. लेट्स रिमूव द बैंड्स एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाट दीज बैंड्स आर लेटर ऑन. लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एंकर्ड वीवैप एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल वीवैप. ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसको लाइन को थिक कर लेते हैं एंड लेट्स मेक इट ब्लू इन कलर. ओके, नाउ इनपुट्स, कैन यू सी द इनपुट टाइम एंड द डेट? गैंगस्टर, काइंडली वेट फॉर द क्वेश्चन टू बी आंसर्ड. बार बार आप वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, तो उसमें सिर्फ वो स्पेस ले रहा है एंड वो क्वेश्चंस को आंसर करने में टाइम लगेगा. सो एंकर्ड वीवैप में क्या होता है? नाउ दिस इज एज ऑफ टुडे मॉर्निंग. ठीक है, सपोज आई वांट द एंकर and I want to basically understand what has been the volume weighted average price since January on an intraday time frame. तो मैं 1 जनवरी 9:15 का करूंगा. अब देखेंगे आप मेरा 1 जनवरी का एंकरिंग होएगा. कैन यू सी दिस? इट इज गेटिंग एंकर्ड फ्रॉम द 1 जनवरी 9:15 से. एंकर्ड वीवैप क्या कर रहा है? ओके, नाउ why is anchored VWAP interesting as a concept? Is because suppose you have an event, suppose you have an earnings, so suppose you have budget, or you have something, some event from where you want to track the volatility of the price. ठीक है, तो उसमें क्या करोगे आप? anchored VWAP यूज करोगे एंड उसको आप टैग कर दोगे. ठीक है, if I have to tag the anchored VWAP since the morning 9:15, तो ये आज का मॉर्निंग का सुबह का हो गया. ठीक है, अब चलिए मुझे सुबह 9:15 नहीं चाहिए एंड मुझे एंकर्ड वीवैप चाहिए. लेट्स से अभी क्या टाइम हो रहा है? 12:30. लेट्स से हम लोगों ने सेशन चालू किया 12 बजे, तो मुझे 12 बजे से चाहिए. कैन यू सी दिस? सो नाउ द एंकर्ड वीवैप कि 12 बजे से जो भी ट्रेडिंग हुआ है, जितना भी वॉल्यूम हुआ है, उसका वेटेड एवरेज प्राइस क्या है. Okay, so anchored VWAP will basically mark that line and give you that line from your specific time start. So this is the main difference between a normal VWAP and an anchored VWAP. Okay, so let's just revert this for the day.
बिकॉज हमको दिन का देखना है. Okay, so this is my anchored VWAP for the day. Okay, and it is showing me certain facts. Now, what is it showing me? Previous day low तो काफी दूर है, ठीक है. So where is the market moving? The market is moving between the resistance and support of the intraday. Okay, and let's keep this screen like this and understand a couple of things. Okay, we have identified the support and resistance intraday. Okay, we have identified previous days high and low or support and resistance, so that we know what could be the levels of resistance, what could be the areas of support, and let us see what the market is trying to do. Okay, so while the market tried to trade above the previous day's high for some time, it has now given up and is now trading around the VWAP price for the day. ठीक है, तो VWAP price के आसपास it is snaking its way around. So what kind of phenomena is this? Let's understand that. Now see this. You have identified the support resistance, you have identified the previous day high, low, and you know now that okay, ये तो हम लोग अभी 12 बजे देख रहे हैं, but even in the first 15 minutes you will have 15 candles. In the first half an hour you will have 30 candles, which will give you a fair idea as to what the market is trying to do. So typically during the beginning of the day, या आप एंकर वीवैप क्या करो, आप एंकर वीवैप एक दिन पहले का करो. ठीक है, एक दिन पहले का एंकर वीवैप कर लो. उससे क्या मालूम होता है? फॉर द फर्स्ट इनिशियल 15 minutes, half an hour, because we are now nearly 2-3 hours into the market, I fix the anchor for today morning. If not, you can fix the anchor for previous day sessions morning, so that you get that average extrapolated for today for the first half an hour or so, to get an idea whether the market is snaking around the VWAP or not. So these are the two patterns that you will see in the market. क्या पैटर्न हो सकता है? VWAP के इर्द गिर्द प्राइस घूम रहा है. ठीक है, अगर वो VWAP के इर्द गिर्द प्राइस घूम रहा है, इफ इट इज मूविंग अराउंड द VWAP, it's a very clear sideways or a range bound price action. Okay, and if it continues to trend like in the case, like in the image on the right hand side, that is a trending market. So between these two, the left hand side, the range bound, or the price when it is sneaking around the VWAP, would be an ideal situation for you to sell options. Is this point clear? Now, so what we have done is, as a trader, we are looking at where the market is going, whether it is going in a sideways direction, whether it is going in a trending direction, trending phase. Okay, you identify the day type. It is a trending day or it is likely to be a, and you are trying to guesstimate this, because आप first half an hour to 1 hour का session देख के you will try to guesstimate what the remainder of the day is likely to do. Basis that you will take a decision whether you want to do a trade or you don't want to do a trade. Okay, now then you confirm with instruments. VWAP is a very strong instrument to tell you whether it is trading well, it is trading in a range, or it is likely to trend. आज का अगर हम देखें यहाँ पर, what is it that you are able to understand? Is the market likely to trend? Is the market likely to trend going forward, or is the market likely to be in a range bound today? Looking at the price action around the levels that we have marked, what is it that you feel? Very clearly, right? It is near the resistance. Okay, these two lines are resistance lines. This is a resistance line, this is a previous day resistance, this is current day resistance. So this is your resistance zone,
Okay, your support is here, and this is your VWAP, correct? So prices are predominantly in this area, right? So our inference here should be prices are sideways to uptrending, because we are closer to the resistance bands and we are sneaking around the VWAP. Is this much clear? ठीक है, ये हमारा प्राइस एक्शन एनालिसिस होता है. एंड सिंस वी आर इन दी वी आर, देखो इवन एट दिस आवर, मतलब करीब 12 साढ़े 12 बजे भी अगर आपको क्लैरिटी मिलती है कि भाई क्या करना चाहिए, ठीक है, you are free to take the trade, right? In order to, because you still have 3 hours of trade left, especially on days when the expiries are there. इस तरह का एनालिसिस आपको काफी फायदेमंद हो सकता है, बिकॉज आप ऐसा नहीं कर रहे हो ब्लाइंडली कि भाई 9:20 को सुबह उठ के आप स्ट्रैडल मार रहे हो या ट्रायंगल मार रहे हो, ऐसा काम नहीं कर रहे. करेक्ट. नाउ what are the strike selections? What are the types of strikes that you will select? Let's see. Okay. Now the first option would be, we know that this is the resistance area. This is R2, this is R1. You sell calls here. Okay. And you know that this is the area where you have made a support. You sell puts here, this area. Okay, resistance, this is your support, right? If you do this sort of buying and selling, this will give you a short strangle. Okay, because the price is here. Now, let me just show it to you how it will look on the chart. If I had to sell a call here, this is my CMP. This is what is called as a classic short strangle. Fair? You now know which strikes you are going to select. रैंडम नहीं है. कई लोग क्या प्रोपोगेट करते हैं कि भाई निफ्टी है ना 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे, 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी है ना 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे. वो बहुत रैंडम चीज है. यू कैन नॉट बी डूइंग दैट, यू शुड नॉट बी डूइंग दैट. यू कैन नॉट हैव अ वन साइज फिट्स ऑल टाइप ऑफ अ सेटअप. आप आइडेंटिफाई करो. सी, देखो यहां पर क्या है, एक आपका लॉजिक लगा है कि भाई यहां पर एक आइडेंटिफाइड सपोर्ट है, एक आइडेंटिफाइड रेजिस्टेंस.
Yeah, guys, I believe there was some network issue, but I think we are live. We are back live. So what we are trying to do here is, as I was explaining, I'm just giving you a short recap. The red color lines are essentially a short strangle setup in which we sell OTM, the calls near the outer resistance and the puts near the supports. And if we decide, okay, we don't want to set it up as a table or a short strangle, but set it up as a short straddle in which we will sell ATM at the money, call and put. This strategy, which looks more like A in shape, is called a short straddle. Let us go to the option simulation software to understand these two setups in brief. Okay. As I had explained, let's say I'm just randomly taking, because again, this is not a recommendation or anything, but let's say we are looking at 26,500 on the upside and 26,400. 26,500 on the upside and 26,400 on the downside, right? Or let's say we go another 100 points out, 100 points out, and this is how we set up a short strangle. Okay, now this is a short strangle. If I want to set up as a short straddle, I'll simply sell the ATM call and ATM put. तो इसको शॉर्ट स्ट्रैडल बोलते हैं. ठीक है, इसका शेप ए के जैसा दिखता है, इसका शेप मोर लाइक अ टेबल दिखता है. ठीक है, नाउ दीज आर द टू प्राइमरी स्ट्रेटजीज an option seller will deploy in the intraday setups. Okay, now in both the strategies, the risk, as you know, turns out to be unlimited. What you can do is you can buy, let's say, an out of the money put and buy an out of the money call to convert this into a iron condor. ठीक है, तो अगर हम लोगों ने आउट ऑफ द मनी में काम किया चारों के चारों, तो ये एक शॉर्ट स्ट्रैंगल को आयन कॉन्डोर में कन्वर्ट करते हैं. एंड अगर मैंने ये ए शेप दिखता हुआ स्ट्रैटेजी को अगर मैंने यहां पर कॉल एंड पुट बाय कर लिया, हेजेस बाय कर लिया, ठीक है, तो ये मेरा आयन बटरफ्लाई बोला जाएगा. ठीक है, सो ये मेरा आयन बटरफ्लाई बोला जाएगा. सो इन शॉर्ट आप क्या समझेंगे? सेलिंग OTM call and put, this is short strangle. ठीक है, देखने के लिए वो इस तरह से दिखता है. You buy OTM call and put. ओके, फर्दर OTM बोलूंगा मैं इसको, और बाहर की तरफ वाले खरीदेंगे. This gets converted, this short strangle gets converted into an iron condor. ठीक है, ये आपका पुट है जो सेल किया है, ये आपका कॉल है जो आपने सेल किया है, ये पुट बाय किया है नीचे का, एंड ये कॉल बाय किया. राइट, सो थीटा डीके होएगा बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू बी विद इन द रेंज, and if it is within a range, you should, on account of theta decay and vega contraction, make money out of this strategy. दूसरा है okay, short straddle. Okay, in which you sell ATM call and put. Okay, if you buy OTM प्लस, मतलब इसके साथ ही साथ
If you buy OTM call and OTM put, this strategy is then converted into an iron butterfly. तो मतलब लिमिटेड रिस्क होता है ना। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? अनलिमिटेड रिस्क इन शॉर्ट straddle एंड स्ट्रैंगल, ठीक है। और आयन बटरफ्लाई, आयन कॉन्डोर एंड आयन बटरफ्लाई, यू हैव लिमिटेड रिस्क एज इज द ग्राफ शोइंग, ठीक है। यहां पर आपको एज अ रिटेल ट्रेडर हायर मार्जिन देना पड़ेगा, यहां पर आपको लोअर मार्जिन देना पड़ेगा। Okay, the primary two differences between a short naked straddle strangle and a covered straddle strangle, मतलब ये बेसिकली straddle strangle ही है। आप hedges खरीद के, आप wings खरीद के आप उसको limited risk में convert करते हो, and because you are buying those hedges wings, तो आपका margin requirement भी drastically कम होता है, ठीक है। And let me show this to you. देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग ले रखे हैं ऑफ एन आयन बटरफ्लाई, जिसमें हम लोगों ने खरीदा हुआ है विंग्स। तो यहाँ पर मेरा मार्जिन कितना लग रहा है? स्टैंड अलोन फंड्स स्ट्रैडल कितना लग रहा है मेरे को? स्टैंड अलोन मार्जिन ले लेते हैं 1.91 lakhs. Okay, if I convert this into an iron butterfly और iron fly बोल लीजिए, what will be the margin requirement then? Iron fly will reduce the margin to simply 74,000, right? तो मेरे को मार्जिन बेनिफिट कितना मिल गया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? तो 1.91 lakhs minus 72,000, मतलब नियरली 50% का मार्जिन मिल गया मेरे को। 50% margin benefit. Risk is covered and you have a margin benefit also. ठीक है। So anybody who is a fresher who wants to trade, who wants to try out options trading using these kind of set pieces, using this kind of rule based setups, you should always focus on doing iron flies and iron condors rather than straddle strangles, simply because your risk is covered, you have limited risk कि अगर आप ट्रेड को हैंडल नहीं कर पाए एंड सडन मार्केट में मूवमेंट आ जाता है फॉर वट एवर रीजन, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लिमिटेड नेचर ऑफ रिस्क इन दीज काइंड ऑफ सेटअप्स, यू नो कि आपका मैक्सिमम पैसा कितना जा सकता है। सो यू आर काइंड ऑफ सिक्योर्ड इन दैट एस्पेक्ट कि यू नो व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस यू आर गोइंग टू मेक। सो वो एक बहुत बड़ा कुशन होता है whenever you are doing a very volatile option trading set piece. Similar है, whether it is institutional trader, whether it is a retail trader, the margin calculation is, ऐसा नहीं है कि ये margin calculation retailers के लिए है या institutions के लिए, नहीं, it is the same thing. इसको स्पैन कैलकुलेटर के थ्रू यूज किया जाता है। देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेसिस इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, वो भी मैं एक सेशन में बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है, अपने को करना नहीं है बट अपने को समझ में आवे ना तो वी बिकम बेटर ऑप्शन ट्रेडर कि भाई उसका लॉजिक क्या है। एक सिंपल मतलब आई जस्ट गिव यू वन सिंपल इंसाइट इनटू दैट। आई टेक टू स्टॉक्स, ठीक है, लेट्स से let's say मारुति, ठीक है, अरे मैरी को आ गया, लेट्स से मारुति, ठीक है। अब मैं अगर मारुति में
मैं एक ऑप्शन बाय कर रहा हूँ ऑफ अराउंड 50 डेल्टा, तो मेरा रिस्क कितना है? 15,000 का मैक्सिमम रिस्क है। ऑप्शन बाइंग में क्या है? मैक्सिमम रिस्क इज टू द ट्यून ऑफ अमाउंट दैट यू आर using to buy that. Let's take another example of another stock. Let's say PFC. I don't know, मतलब I'm just guessing. इसका भी 50 लेते हैं। PFC would be a wrong example. Let's say idea. Okay. Now see, आइडिया भी 50 डेल्टा के आसपास खरीदा, 38,000 का मैक्स रिस्क है। एंड अगर मैंने मारुति भी अराउंड 50 डेल्टा का खरीदा, 15,000 का रिस्क है। 2.5 टाइम्स का ज्यादा रिस्क है इन आइडिया। तो सी बोथ आई एम बाइंग एन ऑप्शन विच इज एट द मनी, राइट, अराउंड और एट द मनी। एट द मनी के आसपास खरीद रहा हूँ, 50 डेल्टा के आसपास खरीद रहा हूँ, बराबर। बट एक में रिस्क है नियरली 40,000, दूसरे में रिस्क है नियरली 15,000। तो इतना फर्क क्यों है? दोनों का मैंने डेल्टा तो सेम ही खरीदा है, दोनों 50 डेल्टा के आसपास ही खरीदा है, तो दोनों में इतना अंतर क्यों है? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आप हमको समझना है व्हेन वी सेगवे इनटू स्टॉक ऑप्शंस ट्रेडिंग। और ये जो चीज है, ये हम कुछ एक दो सेशंस में आगे जो मंडेज को हम करने वाले हैं, उन सेशंस में वी विल बी लर्निंग कि हाउ डू वी मैनेज दिस डिस्क्रिपेंसी। This is not a discrepancy, this is the nature, this is how the stock options are. मतलब ये हकीकत है, this is the nature of the stock options and we need to be aware of this. Okay, so we will look at those things, right? But what have we learned in today's session? So what have we learned in today's session? Do not sell options when the market is trending. Look to sell options when there is a very clear-cut, clean set piece available to you. That is, you have clearly defined resistance and supports. Market is respecting the resistance and support zones, and the market is around the VWAP. In order to capture this kind of data, use the futures chart for Nifty and Bank Nifty in the intraday. You will get to know these things, okay? And use the anchored VWAP as developed by Upstox and use it one day prior. एक दिन पहले का सेशन को एंकर कर दो ताकि आपको एवरेज प्राइस मिल जाए, जिसकी अगर इर्द गिर्द द मार्केट प्राइस इज स्नेकिंग अराउंड तो आपका सेटअप अच्छा मिलता है। आप स्ट्रैडल मारते हो या स्ट्रैंगल, या मतलब आयन फ्लाई करते हो या आयन शॉर्ट स्ट्रैंगल करते हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है ज्यादा, राइट? एज लॉन्ग एज यू आर लिमिटिंग योर रिस्क by buying hedges, right? So these are our checklists. हम लोगों ने बहुत क्लियरली समझा है कि क्या क्या करना है, and this is how we conclude the first session. बीच में थोड़ा इंटरनेट का इशू हुआ था, I will check with the team so that आगे के सेशंस में सेम इशू ना आए और हमको एक स्मूथ पूरा 1 आवर मिले ताकि हम इस चीज को अच्छे से कवर करें विदाउट एनी इंटरप्शन। आई होप एवरीबडी लाइक दिस सेशन। अगर आपके कोई भी कमेंट्स, क्वेश्चंस या कोई भी टॉपिक जो आपको कवर करना हो, अगर आप वो कमेंट सेक्शन में लिखें तो वी विल बी हैप्पी टू टेक देम अप एंड डेवलप कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट अराउंड इट, एंड वी विल कम टू यू। सो दिस इज इंट्राडे, राइट रत्नागिरी कुमार? सो आप अगर आप निफ्टी में कर रहे हो तो आप वीकली भी कर सकते हो, आप बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो यू हैव nothing but the monthly option available now. You can consider Nifty, you can consider Sensex as well. ठीक है? इंट्राडे अगर ऑप्शन सेलिंग का आपको इंटरेस्ट है, आपको डेवलप करना है, आपको सीखना है, तो ये एक सिंपल सेट पीस है, रिकमेंडेशन नहीं है, सेट पीस है कि एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग, रूल बेस्ड सेटअप ढूंढो, अगर मिलता है तो फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करके ट्राई करो, एक दो लॉट से ट्राई करो, सी हाउ इट इज पैनिंग आउट। एक प्रॉफिट का ट्रेड लॉग बनाओ, P&L का ट्रेड लॉग बनाओ, लेट्स से 1 महीना 2 महीना तक आप एक सेट पीस को ही प्रैक्टिस करो, सी एंड ऑफ द डे आपको वो फायदेमंद है कि नहीं है, देन यू विल बी एबल टू डिसाइड, ठीक है? एंड
then you will also understand कि भाई आप इसको और किस तरह से अच्छे से tweak कर सकते हो for your own understanding, and you can customize these things for yourself, right? So do subscribe to Upstox for such interesting and informative content, genuine content, and I'll see you next time on Monday with another interesting episode on options trading. Till such time, this is Amit Goel saying take care. Bye bye.